कैसे हो? मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट इज स्क्रम, और हम इसके बारे में जस्ट बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको स्क्रम सर्टिफाइड बनना है तो कैसे बन सकते हो, किस एज के लिए ज्यादा यूजफुल है। और ये चीजें हमको बताने के लिए आज हमारे पास एक 5 ईयर एक्सपर्ट कह सकते हैं कि शुभम है, वो जिन्होंने हुई स्क्रम सर्टिफाइड। ओके, उनके पास ऑन साइट का भी एक्सपीरियंस है। तो वैसे तो मैनुअल टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर, वो सब कुछ है, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ स्क्रम के बारे में उनसे जानना चाहता हूँ कि यार होता क्या है एग्जैक्टली, है ना, जिसमें ताकि हमको भी पता चले कि भाई ऐसी चीज भी है दुनिया में। ओवर टू यू शुभम, यार कैसे हो? हाय, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया बढ़िया यार, मैंने तुम्हारा बेसिक इंट्रो तो दे दिया। ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस प्लस मैनुअल प्लस ऑटोमेशन टेस्टर प्लस स्क्रम सर्टिफाइड। अपने बारे में हल्का सा कुछ बता दो, लाइक कैसा तुम्हारा हल्का सा जर्नी हुआ टीसीएस में, और फिर कैसे स्क्रम में तुम्हारा इंटरेस्ट आया देने का सर्टिफिकेशन का। Okay. So I've been working with TCS. It's been around 5 years. Okay. And मेरा जो डोमेन रहा है वो ऑटोमेशन टेस्टिंग में रहा है in an insurance domain. Okay. So I basically use Selenium plus Java as a testing tool. Okay. And अब ऐसा है कि जिस समय हम लोगों ने कंपनीज ज्वाइन करी थी, लाइक 2017-16 के आसपास, तब वाटरफॉल मॉडल वाज लाइक बीइंग फॉलोड बाय ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज। देन लेटर ऑन कंपनीज रियलाइज कि ओके, विद चेंज इन रिक्वायरमेंट्स हमें अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, एंड वाटरफॉल मॉडल इज नॉट दैट मॉडल विच इज हेल्पिंग अस अ लॉट. So they come up with an idea to adopt the agile methodology using Scrum framework. Okay. So इसमें हम स्क्रम फ्रेमवर्क में वी यूज मल्टीपल स्प्रिंट्स. एक स्प्रिंट इज अ डेफिनेट वीक्स का होता है, लाइक 2 वीक्स, 3 वीक्स और 4 वीक्स. एंड स्क्रम में मल्टीपल सेरेमनीज होते हैं, स्क्रम इवेंट्स होते हैं, जैसे स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट रिव्यू, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. ओके, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, सो दैट कलेक्टिवली हम एक अच्छा इंक्रीमेंट आफ्टर द एंड ऑफ ईच स्प्रिंट we can produce and we can deliver it to the production. Okay. So waterfall model में क्या होता था कि पूरी requirements हमने एक बार में समझ ली, and then we are trying to develop it, test it, and the deployment happens after 4 months, 6 months, 8 months. It depends on कितना बड़ा हमने product develop करने का try किया है. Now the issue with this methodology is after 8 months you never know, like the customers might not like your product. Okay. और the requirement have changed with the point of view जिससे हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी डेवलपमेंट वाली. now that has been changed over the course of time, so that will lead to a lot of monetary I would say losses to the organization. Okay. And monetary as well as efforts, this human efforts. Okay. So yes, so agile is like a better form to adopt with the growing or evolving nature of the market, और हम उसमें डेवलप करते हैं, तो it is quite useful. You can ask me the question, I can yes मैं सुन रहा, एक्चुअली रिलेट कर रहा था, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं, क्योंकि अगर जो वीडियोस देख रहे हैं व्यूअर्स, ओके, अगर आपने जीरा का नाम सुना है, ठीक है, कुछ लोग जीरा बोलते हैं, कुछ लोग जीरा बोलते हैं, तो उसमें स्प्रिंट्स ही सिंपल सी भाषा में बोलो, ठीक है. अगर मेरे पास, अगर मैं मोबाइल का एग्जांपल लूं सिंपल सी भाषा में, तो मेरे पास इसमें कैमरा है, बैक कैमरा है, स्क्रीन है, बैटरी है, बहुत कुछ है ना. तो ये सारे काम ना तुमको डिवाइड करने हैं उतने ही लोगों में, सिंपल सी भाषा में, ठीक है. तो वो जो वाटरफॉल में यही बोले थे कि भाई कंपनी ने बोला ये एक मोबाइल बना दो, ये सबका है. तो 5 महीने बाद उसको बोला बन गया. उसने बोला नहीं यार, अभी तो मार्केट ही बदल गया, अभी तो रैम भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गया. लास्ट मूवमेंट में चेंजेस होते हैं, वो फिर चेंजेस तो होते सब होता है, कस्टमर का पैसा जाएगा, तुम्हारी मेहनत, सिंपल सी भाषा में बोलो. तो वही जो बोले ना, वो एजाइल में स्प्रिंट्स में काम होता है, तो वही होता है. तुमने कैमरा बनाया, तुमने कस्टमर को बोला कि भाई ये कैमरा बन गया, एक बार टेस्टिंग कर लो, है ना, तो ये पकड़ के भाई देख लो कैमरा ठीक चल रहा है, हाँ बोला ठीक है. 2 महीने बाद डेवलपमेंट करते करते मार्केट में कुछ नया आ गया, तो उसने बोला नहीं नहीं यार ये भी ऐड ही कर दो अभी, क्योंकि आप अभी साइंटिफिक कन्वर्सेशन में थे कस्टमर के साथ. सिंपल सी भाषा में बोलूँ ना, आपको ही पता है अपना Xiaomi के फोन हर 6 महीने बाद नहीं आते, तो अगर कोई एक बंदा बोले उनको फोन बनाते हो, 6 महीने बाद बोलेगा, वो तो पुराना डब्बा बन जाएगा उसका. तो वही था. अभी नेक्स्ट और डिटेल में जानते हैं कि भाई स्क्रम जो है, पर्टिकुलर वर्ड जो मैं यूज करूं, इसका मीनिंग क्या है, और व्हाट इज द बेस्ट एज टू डू दिस सर्टिफिकेशन. तुमने तो अभी रिसेंटली किया, राइट? तो फायदा कैसे मिला, या फिर कोई इंसान उसका फायदा कैसे उठा सकता है स्क्रम के बारे में?
देखो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि द पर्सन हु लाइक टू लर्न, ओके, और जिसका एक माइंडसेट ऐसा होता है कि यू वुड लाइक टू फाइंड अ सॉल्यूशन, a practical solution to an existing problem. I think this is a best suited profile for that particular person. Okay, because it's kind of a leadership role. Okay, jisme you have your product owner, the components of Scrum. I would say now that there is a Scrum master, the product owner, and the development team. Okay, so the product owner is going to gather all the requirements from the stakeholders, and then we are going, then the development team and the whole Scrum team is going to discuss on that part. Okay, so it's a journey from A to Z. So what will happen is the Scrum Master, with his own experience and the leadership qualities, he will guide the team that, okay, this is how things should be done. Whether it is management wise, whether it is technical impediments or anything, okay, he's totally for the team. As they say that it is going to be the servant leader role, right? So it is that kind of a role. So there are no managers in this framework. There is no like employee or something. It's going to be the complete Scrum team which work together for producing the increment. So and when you are like little bit experienced, I would say 3+ experienced people with having that mindset of developing and helping the businesses to find a real life solutions can move onto the certification for this. Okay, so there is one organization called scrum.org. Okay, so from there you can get your PSM1 certification, CSM1 certification, those kind of certification. It's a basic level of certification which gives your organization or to any other person an inference that, okay, this person knows basics about Agile and Scrum. Okay. तुमने कहाँ से सीखा था? मतलब सॉरी, मतलब तुमने कहाँ से सीखा? मतलब तुमको भी किसी ने गाइड किया था या तुम्हारे मन में आया था कि यार मुझे ये इंटरेस्ट है इसमें, मुझे करना है ऐसा? मुझे खुद से इंटरेस्ट था कि आई शुड जस्ट ट्राई टू गिव इट अ शॉट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई एम इन TCS, तो मैनेजर बनने के लिए काफी टाइम लगता है. Okay. Yeah. In order to just help the team with whatever I have learned over the past years, I thought that I can be in that position. और जब मैं ऑनसाइट गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो हमारा क्लाइंट है, they are following a complete Scrum framework. Okay. फिर भी offshore, yeah, there was proper product owner, there were proper, everybody was like into Scrum. Okay. So I got training from there as well, from South Africa, Johannesburg. I got training from there as well, and then I came back and I realized, okay, this is my kick. Being an automation tester, I can help my team. Because what happened, like we were using a different tool called IBM RFT. Okay, then we moved to Selenium in my testing part. Okay? So I decided, okay, rather than following the waterfall model, let us go with Agile, because it would help us to reiterate things properly and retrospect that whether whatever is going wrong and right. So that way we can create a good product. ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम्हारा जो स्क्रम का कितना जो भी खर्चा आया था वो TCS स्पॉन्सर्ड था या खुद की जेब से गया था? TCS स्पॉन्सर्ड था. Yeah. See, there is one talent and development section is there. Okay. Yeah. So if you think that your learning is going to help your project, okay, then you need to get an approval from your supervisor, and if they agrees, then you can get it reimbursed. But the cost for PSM1 is $150. So that's it. Like you make the payment and then reimbursement process can follow once you pass the exam. Because the passing rate for PSM1 is 85%. Yes, there are like 80 questions in 60 minutes you have to do. So that's quite a challenging thing to do. Okay, it needs a lot of practice and the basic understanding of Scrum. It's not going to be that much technical, but you should be able to understand different working scenarios and the bits and bits of the Scrum. So then you will be able to make it. 80% बहुत होता है, I know that, क्योंकि 85% यार बहुत ही होता है, क्योंकि 70% जनरली सेट किया जाता है कंपनी से जो भी करती हैं, ठीक है, बट 85 मतलब. अच्छा, but I'll add one more point. See, a lot of people have confusion on whether to opt for CSM, Certified Scrum Master, or PSM, Professional Scrum Master. Okay. So one basic difference is CSM is valid for 2 years.
Okay. But your PSM is valid for lifetime. This is one difference. And the passing percentage for CSM is 70%. Here in PCM, the passing percentage is 85%. So that's two basic difference. And it's like the credibility of both the certifications is same. It's not that much different. तो guys, मेरा तो यही सजेशन है कि जो भी दे रहा है वो 70% वाला पहले ट्राई करो, बाद में 85% वाला, ठीक है, क्योंकि लास्ट में रिएम्बर्स होने वाला, क्योंकि अगर नहीं हुआ तुम पास, क्योंकि अगर तुम पास नहीं हुए तो पक्का अपनी जेब से पैसे भरोगे, ये बात याद रखना, ठीक है। और ये कुछ याद है क्या तुमको कि लाइक उसका कुछ तो लिमिट रहेगी ना, तुम एक बार या 2 बार दे सकते हो, ऐसा कुछ है याद है कि कुछ नहीं है इसका? Until you have bank balance you can. तो चलो, शुभम ने तो मेहनत करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया, तो आप भी वही अप्रोच रखो और जब जाओ तो फिर यही सोच के जाओ यार, डू और डाई, मतलब एक ही शॉट में देना है, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी डाउट होएगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना और सब्सक्राइब बटन दबा देना, और शुभम का लिंक्डइन जो है लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज कमेंट कर देना और उनको पूछ लेना चाहिए कि भाई मुझे इस टाइप का डाउट है, अगर स्क्रम में है या फिर टीसीएस में टेस्टिंग के रिलेटेड कुछ होगा तो ओके। तो गाइज आपके मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि भाई अभी स्टडी मटेरियल या फिर अप्रोच क्या होना चाहिए ना, कुछ भी एक तरीका होता है, तो वो पाथ क्या है, वो अगर शुभम बता देगा कि क्या माइंडसेट से एग्जाम दे, क्या माइंडसेट से पढ़े, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो एक बार शुभम प्लीज हेल्प कर दो उसमें भी। ओके, सो जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि व्हेन यू start to explore new field, then you directly go to YouTube and look for the videos here how to prepare for this, and there are people who will teach you Scrum in 10 minutes, but it doesn't happen like that. Okay, so what I would say, the simple thing you should do is there are like Scrum guides who are the founders of Scrum. They have written their own book. Okay, so and that book is for only 19 to 21 pages, that's all. Okay, they've explained the complete Scrum there. So what I would say, like, first read 2017 edition. Okay, it's like 21 pages, and then you move to 2019 edition. It is like 17 pages. Okay, and just read it thoroughly. Give it like 3 to 4 times. Isko read karo, and after that, I'll give you some sources. You can like give the links from there. They can practice for the practice questions. जो कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे it would lead you there. I would really recommend don't watch any YouTube videos because they will confuse you. Because what will happen? I have done many Udemy courses for this. So that guy is having a Scrum का पूरा course है 3.5 years का, then 3.5 hours का, and then they have the quiz or the practice sessions. Okay, so in that if you mark something and they are giving a solution to this, so what they say, as per Scrum guide, this is going to be the answer. Okay, there is no practical, logical answer. If you feel like that in this particular scenario, I think product owner should be the person. You mark product owner, but eventually the answer comes out to be the development team. Okay, but in the description they will say that according to Scrum guide, it should be development team. Okay, so rather than listening to anybody else, I would say read the Scrum guide, practice the questions, and you will learn. It's that simple, because it is going to test your basic knowledge on Scrum. It's not going to be the other level. For other level, it is going to PSM 2. So for basic understanding, follow the books and practice questions. That's all. तो ना तो Udemy पकड़ना है ना YouTube पकड़ना है, simple. Udemy पकड़ने का है only for practice questions. Only for practice, yes, okay. Yeah, but अगर आपको sort of confusion, somebody's way of explanation might be as per Scrum guide, but they might be portraying it in a way that you get confused in yourself. Okay, correct. So avoid that. I would say कि make your own understanding and practice via questions. That's all. हाँ, तो ये आप यहाँ पे गाइज जो मैं समझाऊं, ओके, तो ये कहने का मतलब है कि जिसने सपोज अभी एग्जांपल मोबाइल बनाया है वो ज्यादा चीज समझा पाएगा ना, यार ये मैंने कैसे बनाया, रेदर देन ये मैंने दुकानदार को बेचा, दुकानदार ने आगे से रखा हुआ था। मतलब जब नॉलेज टू नॉलेज पास होती है तो आधी होती रहती है और कम होती रहती है उसमें। ओके, डिफरेंस आता है, प्लस अंडरस्टैंडिंग में भी डिफरेंस आता है। तो गाइज आपने वो चाइनीज विस्पर गेम तो सुना ही होगा ना, तो जब आपको भी पता है फिर भाई पास ऑन इन्फॉर्मेशन करोगे तो आधी रहेगी, सिंपल सा फंडा।
तो बेटर है, जो शुभम ने बोला बिल्कुल सही बात बोली, 2007 एडिशन स्क्रम सर्टिफाइड जो है, जिन्होंने स्क्रम बनाया है, ओके, उनसे ही डायरेक्ट पढ़ो। उनके जो लिंक्स हैं वो सारा जो भी है ना वो सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मैं शुभम से अभी ले लूंगा और फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो अपलोड करते हुए डाल दूंगा, तो आपको कहीं भटकना नहीं है, सिर्फ डेडिकेटेडली एक ही जगह से पढ़ना। और जो बोला क्वेश्चंस के लिए, वो भी सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नो नीड टू वरी, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। यस शुभम, वी ऑल गुड राइट? Yes, yes, we are good. Cool. Okay, thank you so much guys for listening, and thanks a ton to Shubham for like giving us information on this scrum. और अगर किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मैसेज करना, कमेंट करना, और फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएंगे, कोशिश की जाएगी पूरी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।